is a division facts. Today is a holiday. Bunty, Cookie, Appu, Tinky and Kattu are playing in the playground. Oh look, here comes Minnie with some packets of strawberries. Seeing the strawberries, everyone runs towards her. I have 5 packets of strawberries. You can distribute them equally among yourselves, says Minnie. I need a paper and pencil to calculate this, says Tinky. There is no need of a paper and pencil, Tinky. Each one of us will get 1 packet, says Bunty. How do you know that each one of us will get 1 packet, Bunty? Asks Tinky. Minnie has 5 packets of strawberries and we are also 5. To distribute the packets equally, we divide 5 by 5 and get 1 as the quotient. So 5 divided by 5 is equal to 1. Therefore, each of us will get 1 packet of strawberries, says Bunty. Here, Bunty has taught us a very important division fact, which states that when a number is divided by itself, the quotient is 1. For example, 7 divided by 7 is equal to 1. 15 divided by 15 is equal to 1. 123 divided by 123 is equal to 1, etc. There are some other division facts also. Let us learn about them. We know that 8 into 1 is equal to 8. From this multiplication fact, we get the division fact. 8 divided by 1 is equal to 8. Similarly, 16 into 1 is equal to 16. So, 16 divided by 1 is equal to 16. Hence, the second division fact is when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. For example, 69 divided by 1 is equal to 69 and 257 divided by 1 is equal to 257. Look at this multiplication fact. 6 into 0 is equal to 0. Thus, 0 divided by 6 is equal to 0. Similarly, 350 into 0 is equal to 0. So, 0 divided by 350 is equal to 0. Here we can say that 0 divided by any number except 0 is 0. Always remember that a number cannot be divided by 0. We know that 10 into 2 is equal to 20. So, 20 divided by 10 is equal to 2. Similarly, 10 into 5 is equal to 50. So, 50 divided by 10 is equal to 5. Thus, we can say that any number which ends in 0 can be divided by 10. For example, 70 divided by 10 is equal to 7. 80 divided by 10 is equal to 8. And 40 divided by 10 is equal to 4. Note that in these 2-digit numbers, the digit at the tens place is the quotient. To learn one more fact, let us observe the table of 5 carefully. In the product, the digit at the ones place is either 5 or 0. It means that
Any number which ends in 0 or 5 can be divided by 5. For example, 10 divided by 5 is equal to 2. 15 divided by 5 is equal to 3. And 40. Very good morning, class 4. How are you all? I hope you all are active. Wonderful. Now we are going to start with the chapter number 6, that is division. And we have already done this chapter in class 3 also. So we will learn more about it, right? We already know division means repeated subtraction and equal distribution. मैम ने आपको थर्ड क्लास में ऑलरेडी बताया था कि जो डिवीजन होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है और जो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, राइट? डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. So you will underline this in your book, right? Next, now let's come to let's revise. First of all, recall the multiplication tables of 13 and 14. हमें क्या करना है, 13 और 14 का टेबल क्या करना है, recall, याद करना है, right? Question number 2. Divide 12 by 24. क्या 12 के टेबल में 24 आता है? क्या 12 के टेबल में 24 आता है? चेक करो. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. तो क्या हो गया, 12 2 जा 24 माइनस 0 0, right? This we have already done in class 3. Question 3. Check the division facts out of the given multiplication facts. हमें इसमें क्या लिखने हैं, डिविजन फैक्ट्स. देखो इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल किया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 3 इज 36. जो भी हमारा आंसर आया उसको हम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 36 है, 36 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 3. 36 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 12, राइट? तो डिवीजन फैक्ट्स में हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर है, जैसे इसमें 70 डिवाइडेड बाय 70 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 14 आएगा. अगर मैं 70 को 14 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 5 आएगा. जो भी आपका आंसर है उसको एक नंबर से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट ओवर नंबर आएगा. अगर मैंने 70 को 5 से डिवाइड किया तो 14 आया, 70 को 14 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आया. क्लियर? क्वेश्चन 4. फिल इन द ब्लैंक्स. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है. 42 डिवाइडेड 1, ठीक है? किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा. क्लियर? एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन 1. फिल इन द ब्लैंक्स. 40 डिवाइडेड बाय 8. इट्स वेरी इजी. चेक करो 8 के टेबल में 40 कब आता है. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. तो आंसर आया 5. 8 के टेबल में 40 कब आता है. 8 5 जा 40, राइट? नाउ लेट्स कम टू द डी पार्ट. ओके, अब 9 के टेबल में 63 कब आता है. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 7 जा 54, 9 8 9 7 9 6 जा 54, 9 7 जा 63.
तो 9 7 से क्या हुआ 63, राइट। नाउ क्वेश्चन 2. Question 2 I'll be explaining you later. Just leave this. Next comes make the following statements true by filling cross or divide in the boxes. हमें multiply या divide लगाना है। 9 को मैं multiply करूंगी 3 से तब मेरा 27 आएगा, या 9 को मैं divide करूंगी 3 से तब मेरा 27। Now see the C part. 108 को मैं 12 से क्या करूंगी कि मेरा 9 आएगा, डिवाइड। 108 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आएगा 9।